Good evening, viewers. You're watching 6 Stories at 6, and I am Rakhta Mishra with you with an action-packed show at 6 p.m. Viewers, we are going to tell you what has happened all this Monday and the stories lined up for you. The Hindu groups have staged massive protests across Maharashtra against Aurangzeb's grave, and there's a big message that has been sent out by the Maharashtra Chief Minister as well. Next story that we have lined up for you is influencer brat. The so-called Bollywood celebrity Orry has been booked, and he's also facing an SRT probe now. We'll tell you why. Also on the show, Republic is going to expose those who landed on the streets to protest against the Waqf Amendment bill, but they do not know what they are protesting against. What are their demands? They're completely clueless, and Republic shows that on camera. And viewers, Pakistan cricket, jumping and thumping chest on hosting the Champions Trophy, has landed in just more trouble. There's loss of trophy and loss of face, loss of money also for Pakistan. They have lost big time. Defense Minister Rajnath Singh in the national capital has raised the issue of Khalistani elements and activities in America with the US Intel Chief Tulsi Gabbard. We'll get you the inside details of that meeting. Also, the wait for NASA astronaut of Indian origin, Sunita Williams, the wait is going to be over very, very soon. She's going to land tomorrow. We get you everything about it and how the family also feels. Right, let's start with the top story that we are tracking for you on 6 Stories at 6 viewers. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has taken a very strong stand against the Aurangzeb Fan Club. He has in fact vowed that he will not allow anyone to glorify the Mughal ruler known for his atrocities. And he will protect the Aurangzeb grave, but there will be no endorsement of those who glorify him. His statement was also backed by Deputy Chief Minister and Shiv Sena leader Eknath Shinde. Listen in. आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही. हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे. आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे, आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे. काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं. पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही. त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्या ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो. ज्या भावना या शिवभक्तांच्या आहेत त्या भावनांचा आदर मी देखील करतो, कारण शेवटी औरंगजेब हा महाराष्ट्रावर चाल करून आला. त्याने अनेक मंदिरं तोडली, माता भगिनींवर अत्याचार केले आणि धर्मवीर संभाजी महाराजांचा अनन्वित छळ केला. 40 दिवस त्यांना हात पाय साखळदंडाने बांधून त्यांचे डोळे काढले, जीभ छाटली, त्यांची नखं कापली, अंगावरची कातडी सोडली, अत्याचार एवढे भयानक केले. परंतु छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांनी प्राणांचं बलिदान केलं, परंतु ते औरंग्यासमोर झुकले नाही. कौर्याची जी काय परिसीमा त्यांनी गाठली होती, आणि अशा औरंग्याच्या आठवणी किंवा त्याच्या निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे. ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे, आणि त्यांची भावना बरोबर आहे. त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे.
And Vinod Bansal, who is the VHP national spokesperson, joins us on the broadcast. Mr. Bansal, well, there have been calls and protests by VHP and also Bajrang Dal today, big protests happening against Aurangzeb's grave. Now, we have the Chief Minister who has given a big statement and he has vowed that he will not let anyone glorify औरंगजेब. किसी को भी वो औरंगजेब का महिमा मंडन करने नहीं देंगे, कम से कम महाराष्ट्र में नहीं कर देंगे, लेकिन जो औरंगजेब की कब्र है उसका जो प्रोटेक्शन है वो करना पड़ेगा, वो एएसआई के संरक्षण में चूंकि है. कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, एएसआई की अपनी मजबूरी है. निश्चित रूप से देखिए, मैं साधुवाद देता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को, दोनों ने मिलकर के जिस तरह का बयान दिया है. निस्संदेह आज हमारा जो प्रदर्शन है वो सफल हुआ. और मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि अभी हम इस मामले में यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और निस्संदेह जो हम इस खबर को समाप्त करके रहेंगे. हमने आज जो है ना पूरे राज्यव्यापी प्रदर्शन करके सैकड़ों स्थानों पर ज्ञापन दिया और एक जनमत संग्रह किया एक तरह से, और संपूर्ण देश के लोगों को एक औरंगजेब जैसे आक्रांता, आतंकवादी और आतताई और क्रूर शासक के विरुद्ध जो है एक बड़ी आवाज बुलंद की है. संपूर्ण देश नहीं बल्कि पूरा विश्व हमारे साथ है. आज बजरंग दल ने जिस तरह के साहस का परिचय दिया और वहां पर जाकर के जिस तरह से उसको इस कब्र के विरुद्ध में, और जो कब्र का समर्थन करने वाले औरंगजेबी मानसिकता से जीने वाले लोग, जो औरंगजेबी लोग हैं बेसिकली, वो उनको भी एक बेनकाब करने का काम किया है. हमें सिर्फ कब्र ही नहीं बल्कि कब्र के साथ साथ हमें उस औरंगजेबी मानसिकता को भी समाप्त करना है देश से, जो कि बार बार औरंगजेब का नाम लेकर के अपने आप को उस औरंगजेब का गुलाम या औरंगजेब का वंशज या औरंगजेब को अपने को इंस्पिरेशन समझने वाले हैं. मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार औरंगजेब का न किसी हिंदू से न मुसलमान से किसी का कोई संबंध था ही नहीं. वो विदेशी था, आक्रांता था, दुष्ट था और दानव था. वो उसने जिस तरह से हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और लगातार हमारे जो सांप्रदायिक जो दुर्भावना के साथ में मजहबी जो कट्टरता के साथ में उसने जो काम किया वो दुनिया को पता है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है. लेकिन आज का जो प्रदर्शन है वो वास्तव में एक सक्सेसफुल प्रदर्शन था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण समाज को एक करके और पूरी मराठा की भूमि को पवित्रता से की रक्षा करने के लिए एक संकल्प व्यक्त किया है. आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम इस बात को लेकर के आज सफल रहे कि हमने जो है वो औरंगजेबी मानसिकता को बेनकाब किया है. अब आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग उस औरंगजेब को अपना अनुयायी समझते हैं या औरंगजेब को अपना हीरो समझते हैं या औरंगजेब को अपना जो वंशज समझते हैं, ऐसी मानसिकता को भी समाप्त करना है. माननीय प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले, आपको याद होगा कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बोला था कि भाई हम जो है ना वो अब समय आ गया है कि गुलामी के प्रतीकों को हटाएं और न सिर्फ गुलामी के प्रतीकों को लेकिन गुलामी से भरी मानसिकता को भी हटाएं. तो देश भर में जहां भी ऐसे औरंगजेब, हुमायूं और बाबर और अकबर के नाम के जो जितने भी स्तंभ हैं वो सब समाप्त होने चाहिए. अपने आप ही समाज में इस तरह का जागरण चेतना जागृत होगी. बिल्कुल. विनोद बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. विद योर थॉट्स ऑन दैट स्टोरी, व्यूअर्स, we quickly shift our focus now to the other story that we are tracking now. Orhan Awatramani, also known as Orry, has taken over the headlines for all the wrong reasons right now. Jammu and Kashmir police have booked him along with 7 others for consuming alcohol at a hotel in Katra near the Vaishno Devi shrine. Now, the incident has come to light after he shared an Instagram story showing just moments, they're showing and sharing the moments with his friend. He was partying there and you can see a liquor bottle there. There has been an FIR that has been filed and a video of the incident has also gone viral. Netizens are criticizing Orry left, right and center for disrespecting Hindu sentiments. So this is another case where you see celebrities disrespecting the Hindu sentiments. You can see the left side, you can see alcohol being poured onto a cake by Ranbir Kapoor, it's a top Bollywood actor, and he chants Jai Mata Di, not chant, just can correct that spelling, chant Jai Mata Di. He chants Jai Mata Di, and that's when a complaint was filed against him as well. Now we see this so-called celebrity who poses with every Bollywood actor possible and is a so-called socialite, an influencer brat. He is partying near the Mata Vaishno Devi shrine. Here's more on that. Controversy erupted after popular social media influencer Orhan Awatramani, also known as Orry, was booked for consuming alcohol near Vaishno Devi shrine in Katra. The police complaint has been filed against Orry and 7 of his friends at the Katra police station.
According to the police, alcohol consumption and non-vegetarian food are prohibited in Katra, which is where the devotees begin their holy trip to the Vaishno Devi shrine. इसमें एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ था और हमें होटल के जीएम के थ्रू भी एक जानकारी, एक कंप्लेंट आई हमारे पुलिस स्टेशन में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ओरी नामक जो एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे होटल में था और उन्होंने शराब का मीन्स कंजप्शन वहाँ पे किया। और आप जानते हैं कि हमारे जो कटरा टाउन एक होली टाउन है और दुनिया भर के लोग वहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है। और वहाँ के एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की एक नोटिफिकेशन के तहत अल्कोहल का वहाँ पे कंजप्शन और सेल प्रोहिबिटेड है, और उसी नोटिफिकेशन का कॉग्निजेंस लेते हुए हमने उन लोगों के खिलाफ एक पर्चा दायर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। The matter came to light after videos of Orry and his friends consuming alcohol went viral on social media, causing resettlement in the town. The police has charged Orry with violating the district magistrate's order and allegedly hurting religious sentiments. Meanwhile, Republic has confronted one of the managers of the Marriott Resort and Spa, where Orry and his friends stayed. You are not directly known to this incident. नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आपको बहुत क्लियरली बताया है कि तो आपको ही मालूम प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, दैट्स इट। ओके, ठीक है, मतलब मेरे पास तो जो आपने ये लिख के दिया है वही है। हाँ, इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी सब कुछ दे चुका हूँ। जब नहीं, ये तो लिखा नहीं है ना, इसमें लिखा नहीं है, तो बस वही है सर, जो भी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वही दे पाएंगे। ठीक है। The Jammu and Kashmir police has formed a special investigation team in the case. While the BJP has condemned and demanded action against Orry and his friends for hurting the sentiments of Sanatan Dharma. All right, for more on this, I have Faizan Ansari, who is also an influencer. He has 1 million followers on Instagram and he is wanting to share his thoughts. Mr. Ansari, आप बताइए कि कितना सही है ये, जब हम देखते हैं कि इतने फॉलोअर्स हैं इन लोगों के, और ये हम देखते हैं ऑरी को तो बहुत सारे लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ के साथ, बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, उनके सन्स एंड डॉटर्स के साथ हम देखते हैं। क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? एक विजुअल अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, 1 साल शायद हो चुके हैं उस बात को, रणबीर कपूर केक पर लिकर डाल रहे होते हैं और माता रानी का नाम लेते हैं। अब बहुत इररिस्पॉन्सिबल एक रवैया रहा है। क्या इनको बिल्कुल भी ये सुध-बुध नहीं है कि ये इनको तमाम लोग देख रहे हैं, हर मजहब के लोग देख रहे हैं, और इनको क्या लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं और कोई नहीं समझेगा, कोई पता नहीं चलेगा? नहीं, राइट मैम, अगर कोई कोई इन्फ्लुएंसर है या पब्लिक फिगर है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको ही हूबहू उनको फॉलो करके वैसी बने, तो उसके लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बट ऑरी का मैं फिर से कहना चाहूंगा मैम, जो जाने अनजाने में ऑरी से गलती हुई है या कोई ना कोई इसके पीछे जरूर रीजन है, क्योंकि पर्सनली वो किसी भी धर्म को ऐसे इस तरह से किसी की भी इंसल्ट नहीं कर सकते। वो ऑरी तो मुस्लिम या क्रिश्चियन अगर लोग हैं उनसे भी बहुत प्यार करते हैं और हमेशा दोस्ती निभाते हैं, ये मैंने पर्सनली बॉम्बे में देखा है। मैं आप वैष्णो देवी जाते हैं, अगर आपको पता है, तो बच्चे को पता है वैष्णो देवी की महिमा क्या है, वो एक शक्ति पीठ है। वहां पर आप किसी भी आप इस तरह के एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस श्राइन पे आप क्यों लिकर कंज्यूम करेंगे? आप वहां पर शराब का सेवन क्यों करेंगे? आप मीट का सेवन क्यों करेंगे? एक सैंक्टिटी होती है हर जगह की, और इसको वायलेट किया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो भी ये पूरी फ्रेटर्निटी है, इसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, या खबरों में आने के लिए अच्छी पब्लिसिटी भी है ये? नहीं मैम, ये कभी भी किसी भी रिलीजन को तो मैम पब्लिसिटी के लिए आई थिंक यूज नहीं करना चाहिए। वो कोई भी नाम हो, कितना बड़ा भी नाम हो इंडस्ट्री का, तो मुझे हमेशा यही लगता है, और मैंने भी जितना मैम बॉलीवुड फ्रेटर्निटी में देखा है या जो भी इंडस्ट्री के सर्किल में देखा है, सो जितने लोग होते हैं उस चीज को तो हमेशा मैम वो लोग रिस्पेक्ट करते ही हैं, वो कोई भी रिलीजन हो। तो अगर ऑरी ने जानबूझ के किया है तो ऑफकोर्स ये गलत है मैम। So of course, social media is flooded with criticism against these influencers for hurting religious sentiments time and again, and many voices are also now getting only louder to call out this irresponsible behavior
and the constant insult to Sanatan Dharma. Viewers, we shift our focus to this other story that we have been tracking for you this Monday. Members of the All India Muslim Personal Law Board, the apex body for the Muslims in India for their personal laws, have gathered at Delhi's Jantar Mantar to stage protests against the Waqf Amendment bill, calling it a direct attack on Muslims. The board said that the bill would pave the way for usurping Waqf properties. They are snatching the rights of Muslims. Protests are coming in after the Union Cabinet led by Prime Minister Modi approved the proposed amendments to the Waqf Amendment bill after incorporating changes recommended by the Joint Parliamentary Committee. Viewers, now Republic TV in fact has spoken to these protesters on ground at Jantar Mantar, asking them what are their demands. But you listen in what they say. They're completely clueless. They have no idea what they are demanding, what are they fighting for. आपको पता है कि ये जो बिल है जहाँ पे जो इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसको मतलब सरकार लाएगी, इसके बिल किस लिए है, इसका मुख्य वजह क्या है करने की? जो भी है, आप तो यहाँ पे धरना देने आए हैं, आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आप तो मतलब आपको दिया हुआ है ये मतलब प्लेकार्ड दिया हुआ है, कम से कम कुछ तो पता होगा आपको कि आप किस लिए यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट देने के लिए? मुसलमान की जो धरती है जी, उस पर कुछ हुआ है, दबा रखी है, कुछ अभी बिल पास करने को है। आपको पता है कि आप किस लिए विरोध देने आए हैं या फिर आप बस ऐसे यहाँ पे आए हैं, आपको बोला गया आने के लिए? अच्छा, आप कुछ बोलना चाहे कि आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, हमें पता है किस लिए आए, क्योंकि ये मुसलमानों की संपत्ति है, वक़्फ़ की जो ज़मीन है। कोई लोग बोलेंगे कि सिर्फ मुसलमानों की ही क्यों, देश की क्यों नहीं? क्योंकि मुसलमान जो हिस्सों किया था जी, मुसलमानों ने हिस्सों को दान किया हुआ है, यह मुसलमानों की संपत्ति है जी, देश की संपत्ति नहीं है। देश की कैसे है जी? Now viewers, after 1996, Pakistan hosted an ICC tournament on their own soil in hope of reviving its condition, but it has now landed in deeper trouble. It's already in tatters and it's gone worse. So-called hosts of Champions Trophy 2025 have incurred a loss of $85 million, that is 869 crore Indian rupees, by hosting the Champions Trophy, a tournament in which they played just one game at home. 85% loss on their investment in the ICC Champions Trophy 2025, viewers. And as per reports, PCB spent around 14 billion Pakistani rupees to renovate the stadiums that were in shambles as an ICC tournament returned to their country for the first time ever since 1996. Now, the lack of corresponding income has forced PCB to take an overdraft in the region of 3 to 6 billion Pakistani rupees to manage the expenses. Now, a report in Dawn newspaper, that's Pakistani Daily, has stated that PCB has also taken to cutting down the match fees for the National T20 Cup to manage this financial crisis. And as per the report, the match fees was reduced from 40,000 rupees to 10,000 rupees without any official announcement. However, after discontent from domestic cricketers, it has been raised to 30,000 per match, still 10,000 less than what it was last year. And besides slashing the match fee, the accommodation for players has also been changed. No more 5-star hotels for the players. So the players are, they are facing the brunt of it all. Shekhar Vijayan, sports expert, is joining us on the broadcast. Mr. Vijayan, well, Pakistan was, thumping its chest and being so adamant that India should play and come. We are the official host. Nobody can take away. But it's for everybody to see. Right from the time it has been hosted, we've seen the situation of the stadiums. We've seen how Pakistan performed. There's loss of face, there's loss of money as well. It's more and more embarrassment, and Pakistan cricket is in doldrums. Oh yes, Pakistan cricket is doldrums because I think right from the beginning, and I've seen it. Republic TV has been, been so many programs around this, around the sad state, around the sad infrastructure, the shoddy infrastructure, which Pakistan had built up, for this Champions Trophy. And not just the infrastructure, I think the entire cricketing system, the entire fraternity, the entire leadership, the way the cricket is being managed there has been absolutely abysmal. It's been very bad, they don't seem like a country which can compete. They've been losing at all quarters. They've lost against all the nations. And the fact that they thought this Champions Trophy will bring them back into reckoning. But I think, they were not able to play the games also. And the fact that, all these games which were played, they were played in Dubai, in Pakistan, and somehow they did not get what they really wanted and what they thought they would deserve. I think it's also an outcome of
the fact that they were not planned, they did not think in advance, they did not plan for such a big tournament that how they would benefit from it, and they just reaping the things they've done in the past. It also goes to show the fact that a lot of countries are not very comfortable going to Pakistan for security reasons, for various reasons, and Pakistan by itself has not built a structure by which they could use the talent well. They're not able to compete with other countries. They're not playing with other countries regularly, which does make a big difference. So this is something which Pakistan really needs to look within and needs to focus on themselves rather than focusing on other countries and poking faults at others, especially India, which they tend to look at India and pinpoint India's areas of concern. So I think Pakistan needs to focus on themselves first and work on a lot of things, because there's a lot of things they need to focus on in terms of infrastructure, in terms of security, in terms of players, in terms of leadership, and in terms of talent. Thank you so much, Mr. Shikhar Vijayan, for joining us on Republic TV with your thoughts on that story. We will shift our focus to the national capital, where India and the US explored avenues for deepening collaboration in areas including cutting-edge defense innovation and niche technologies. We're talking about this conversation, this meeting between with the Defense Minister Rajnath Singh and Tulsi Gabbard, the US Intel chief. So there were advancing mutual strategic interests that were discussed in this meeting. And also, very importantly, Rajnath Singh also raised the issue of Khalistani activities in United States and the way temples are being targeted in America as well, and called for action against these elements. Here's more. US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard held bilateral discussions with Defense Minister Rajnath Singh, focusing on boosting defense and security ties between the two countries. The meeting between the two aimed to further deepen the India-US partnership. The meeting comes after the US Intel chief met National Security Advisor Ajit Doval, where both discussed security collaboration aligning with the India-US strategic partnership. Reports say that during Gabbard's meeting with the defense minister, Rajnath Singh raised the issue of anti-India activities conducted by banned Khalistani organization Sikhs for Justice in the US, and sought action against the unlawful organization. Gabbard, who commenced her 2.5-day visit to Delhi, marked the first senior-level visit from the Trump administration to India in the US president's second term. Gabbard's visit is part of a broader tour which will also take her to Japan, Thailand, and France. President Trump, through his first administration in the presidency, and it continues now, has been very clear about his commitment to defeating this threat of Islamist terrorism that has unfortunately plagued us, has and continues to pose a direct threat to the American people. But we see how it's been impacting people here in India, in Bangladesh, currently ongoing in Syria, Israel, and different countries in the Middle East. So this is a threat that I know Prime Minister Modi also takes seriously, and one where the leaders of our two countries will work together to try to identify and defeat that threat. During her visit, Gabbard also discussed how Islamic terrorism plagued the United States, India, and reiterated that both Prime Minister Modi and Trump remain committed toward defeating the threat. Gabbard's visit reflects how India and US remain committed to further deepen the India-US partnership. And now, stranded at the International Space Station for over 10 months, almost 10 months, Indian origin NASA astronaut Sunita Williams is all set to re-enter Earth's gravitational force on the 18th of March. And after delaying her comeback over technical issues time and again detected in the spacecraft carrying her, NASA says that the astronaut's anticipated ocean splashdown will take place off the Florida coast on the 18th of March. Although Sunita Williams' return is a joyous moment for her, experts suggest that the real challenge for NASA astronaut will begin after she re-enters the Earth's gravity. Just hours now stand between stranded astronaut Sunita Williams and a happy homecoming. Sunita, along with fellow struck NASA astronaut Butch Wilmore, all set to return to Earth aboard a rescue spacecraft.
The rescue team, or Crew 10, aboard the SpaceX craft docked at the International Space Station. Ahead of their much-awaited homecoming, Sunita and her NASA mate sent out a thank you message to the US President Donald Trump for fronting the efforts toward bringing them back. Before long, so don't make all those plans without me. We'll be back before too long. I can tell you at the outset, all of us have the utmost respect for Mr. Musk, and obviously respect and admiration for our President of the United States, Donald Trump. We appreciate them. We appreciate all that they do for us, for human spaceflight, for our nation. In heartwarming visuals, earlier Sunita and Wilmore have seen sharing tight hugs with the rescue personnel after they docked at the space station. In more visuals, the relieved NASA astronauts were seen happily posing for photographs with the rescue team. As the world counts to the much-awaited homecoming, here's wishing them a safe flight. Crew 10 has had a great journey up here, about 28 hours to get back. All right, so of course everybody is waiting with a bated breath, and Republic TV will be tracking down Sunita Williams' homecoming for sure. But right now, that's all from our side on 6 Stories at 6.